There has been a constant price rise of essential commodities, ranging from vegetables to gas and other items in 8 years, 8-year rule of Modi government. In the past 5 years, prices of rice and wheat, the two most important cereals for Indians, have increased by 24%, wheat flour by 28%, and pulses by 20 to 30%, according to data put out by Department of Consumer Affairs. Pulses are an important source of protein in India, and their exorbitant prices have put them out of reach for most poor families. This has had a dire effect on nutrition levels. Cooking oil prices have zoomed up uncomfortably. Groundnut oil by 41%. Mustard oil by 71%. Vanaspati by 112%. Sunflower oil by 107%. And palm oil by 128%. Every Indian family uses cooking oil, and these hikes have led to a severe dent in family spending because it is impossible to skip using cooking oils. Price rise is not restricted to food grain and cooking oils alone. Prices of potatoes have increased by 65%, onions by 69%, and tomatoes by 155%. In the past 5 years. These are seasonal ups and downs in these other vegetables which only go to show a policy paralysis about vegetable supply. Various other essential items are also showing severe inflationary pressure. While milk prices have gone up by 25%, loose tea leaves have risen by 41%, and even iodized salt has increased by 28% in this period. According to the Agricultural Ministry data, Indian farmers have produced record food grain harvest for the past several years. Cereal production was 234.87 million ton in 2014 when NDA government took over, and since then it has increased to 285.28 million tons last year, an increase of nearly 22%. Pulses production was 17.15, which increased to 25.46 million ton last year, an increase of nearly 49%. It is tragic and a testimony to this government's policies that despite this abundance, farmers are fighting to get better prices and consumers are weighed down by high prices. What would the government have done to ease food grain prices? Instead of sitting on huge stockpiles of food grains, if the government had expanded the public distribution system to include more families that are currently excluded and to include their essential items of consumption like cooking oils, pulses, salt, milk, etc., then not only would needy families get these items cheap, but even open market prices would have reduced. You will have to finish on time because we have many speakers today. Yes. I am only started, sir. But this government is so committed to free market concept that refused to expand the PDS even when sufficient stock existed in the government warehouses. When the PDS is expanded, our Kerala experience is, when the government, the first Pranay government came to power in 2016, that government announced 16 items supplying through PDS should not be hiked the price. Even now, after 7 years, that pulses and other essential items are selling in the same prices. That's the only instance in the country, in Kerala. Only in Kerala. Not only that, in 2020, during the pandemic, this government tried to facilitate private traders by bringing in laws to dismantle the procurement system and allow free trade, stocking and pricing. A year-long struggle by brave farmers forced the government to retreat.
This year, government again hurriedly started pushing wheat exports, luring farmers and traders with the idea of making profit from the high global price of wheat. That led to 55% drop in procurement. Finally, the government realized that it had made a mistake in pushing exports and announced a ban. However, the damage to procurement has done. It is likely that wheat prices will continue to remain high in the open market. Consumers may be deprived of wheat in their monthly ration quotas, forcing them to go and buy the high-priced wheat in the markets. Sir, another important thing I would like to mention is unprecedented rise in the price of petroleum products and cooking gas, etc., have already resulted in the price rise of all items in the market, and current decision to tax essential commodities will aggravate the people's misery. Independent India abandoned the policy of colonial British government's tax on food items. In these last 75 years, food items like rice, wheat, pulses, etc., and other daily essentials like curd, paneer, meat, fish, jaggery were never taxed. All these were exempted items have come inside the purview of GST now. Very bad. The range of items on which GST have been increased also includes crematorium charges, hospital rooms, writing ink, even to the withdraw on saving from their bank account, people to pay 18% GST on bank checks. Shame. These decisions have been rolled out when there is a runaway price rise, with the consumer price index ranging above 7% and the wholesale price index by 15%, soaring unemployment, a tumbling rupee, unprecedented trade deficit, and stumbling GDP growth. These hikes will further ruin people's livelihood. To raise revenue, the government must tax the super rich and not impose burden on the people. The government is giving them further tax concessions and loan waiver to the corporates. Many of the luxury goods that should have been taxed heavily are having a modest GST. Gold purchase are taxed only 3%, diamonds at 1.5%, but the rice and essential commodities at 5% GST. What is the justification, sir? Shame. Sir, Thank you, Mr. Finance Minister, I am quoting the Finance Minister's tweet. It has been prescribed that GST on these goods shall apply when supplied in pre-packaged and labeled commodities, attracting the provision of Legal Metrology Act. Quotation close. The Legal Metrology Act defines pre-packaged commodity as a commodity which without the purchaser being present in place in a package so that the product contained therein is a predetermined quantity. This is the format that now these commodities are being sold in the market. They all would attract 5% tax. Also, through this move, government has removed the distinction between branded and unbranded. From July 18, 2022, all items would attract GST when pre-packed and labeled. There is no reference of branding in the new system. A high-value brand Thank you, Mr. Karim. Thank you. I am calling the next speaker. Thank you. Would equally attract a tax. I am concluding, sir. When GST was originally drawn up, the GST Council decided to exempt food grains and number of necessities from tax. They would tax it only if they are being sold under registered brands. Thus, retail traders or small companies who were selling grains and other flour, either loose, packaged or labeled, were exempted from the tax. Their customers were mostly ordinary people who could not afford higher prices or branded products. Thus, the existing GST tax system exempted ordinary consumers and smaller companies from tax burden, while the big brands were in tax. Thank you, Mr. Karim. You cannot go on reading. Only one point more. You have already spoken your last point. Last point, Finance Minister tweeted that in the GST Council, the subcommittee unanimously recommended the 5% tax. It is not true, sir. Kerala Finance Ministers were one of the members. Rajasthan, Maharashtra, Karnataka government were also there.
there was no unanimous decision to impose 5% GST on food grains and other essential items. Thank you. So Thank it is you. an arbitrary statement. She has to withdraw that statement. Our Chief Minister and Finance Minister had written specific letters to Finance Thank you. Minister. Thank you. So they had to react on that point. Sir, Thank you for that. Your last point is over. while the prices of petroleum products and essential commodities like rice, wheat and all other No, Mr. items. Karim, we cannot go People are on and coming on to and the on. There street. are other members. People are coming to the street and protesting. Sir, You said last only point, how through- many points only you are through bringing? Dividing the people on communal basis, religion basis. Thank you. Thank you. cannot I'm calling the next continue speaker. as it is. Please be People of seated. India Thank you. unitedly fight out these anti-people policies. Thank you, sir. The next speaker is Prakash Jabarekar. सच ही बोल रहा हूं। पहले तो उपसभापति महोदय जी, महंगाई एक ऐसी चीज है कि किसी को भी दुख ही होगा। महंगाई बढ़ी तो बहुत आनंद हुआ, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता। लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहां महंगाई बढ़ती ही नहीं? बढ़ती है, लिमिट में बढ़ती है क्या? और मूल मुद्दा क्या होता है कि आपकी इनकम जितना बढ़ता है उसके ज्यादा महंगाई बढ़ रही है या प्रोपोर्शन में है? क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी भी इसको समझे। हम किसानों के मेले में जाकर क्या कहते हैं? किसानों के मेले में हम जाकर कहते हैं कि लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, उसके दाम बढ़ने चाहिए। करेक्ट है, जो प्रोड्यूस करता है उसको अधिकार का मिलना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नहीं, वो सस्ता चाहिए, मार्केट में सस्ती चाहिए। और अनाज में आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सरकार 20 रुपए यानी सभी खर्चा मिलके 30 रुपए में 1 किलो चावल लेती है, तैयार होता है, और 30 रुपए का चावल राज्यों को 3 रुपए में देती है। और 2 साल फ्री में दिया था 80 करोड़ लोगों को पूरा राशन। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं था। अब इसको खर्चा आएगी कि नहीं? 2,71,000 करोड़ रुपए खर्चा आया, वो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादक को कीमत दो, दूसरा टैक्स मत लगाओ और लोगों को सस्ता दो। हम कुछ तो हमारे से ऑनेस्ट होना चाहिए खुद से कि हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, कंपैरिजन में बोलना चाहिए। अभी जैसे एक चर्चा चली, और इसलिए मैंने, और एक उदाहरण है, विपक्ष दिल समझे क्या करना है। आप रूम के अंदर एक बोलते हो और रूम के बाहर आकर दूसरा ही बयान देते हैं। जहां तक मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि जीएसटी का सारे रेट्स पहले ही, जब जीएसटी काउंसिल पहले शुरू हुई तो रेट्स, रूल्स और एक्ट का टेक्स्ट was verified and approved unanimously. This is the best example of cooperative federalism. लेकिन जीएसटी मान्य करके बाहर आए और प्रेस के डंडे दिखे तो तुरंत ये गब्बर सिंह टैक्स हो जाता है। ये कैसे होता है? मैं पाखंडी शब्द को उपयोग करने वाला था, लेकिन पाखंड अभी अनपार्लियामेंट्री हो गया है, नहीं बोल रहा है ये नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। Wait. If it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically तो expired. मूल मुद्दा है,
Don't worry about this. Don't worry about that. I'm telling you, if it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expunged. चलिए बैठिए। Don't shout. Don't shout. अरे अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। मूल मुद्दा, इसलिए मैंने नया शब्द तैयार किया कि अंदर एक बाहर एक। दूसरा उदाहरण, अभी जो विश्वम जी हमारे साथी है, उनकी जानकारी होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलेगी तो क्लियर करेगी। ये जो पैक्ड फूड पे 5% जीएसटी लगा है, ये भी जीएसटी काउंसिल में हुआ है। और अपने देश की जीएसटी काउंसिल को मैं बधाई देता हूं कि पूरा यूनिफॉर्मली, यूनानिमसली निर्णय हुए हैं। एक हाथ निर्णय, मैं बताता हूं। अरे एक मिनट, रिकॉर्ड है, आप देख लो कितनी बार वोटिंग हुआ, क्योंकि बहुमत से वोटिंग होने का भी और निर्णय होने की भी प्रोविजन है, ये समझ ले। अब दूसरा, तीसरा अंदर एक बाहर एक। पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार ने 8 रुपए और 6 रुपए कम किए, दो बार। एक मिनट, अरे भाई, राज्यों ने वैट कितने कम किए? केवल भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स ने कम किए, बाकी ने नहीं किए। और सुनो, महाराष्ट्र, अरे आपके आय, सभी राज्यों की आय भी बढ़ी ना। दूसरा मुद्दा, नहीं दे आता हूं, ऐसा है, ये ऐसा है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में जो सरकार अभी तक थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर तो वैट कम नहीं किया, लेकिन शराब पर एक्साइज कम किया। ये नीति है। और इसलिए अंदर एक बाहर एक, ये लोग समझते हैं। और लोग ये विपक्ष का जो दोहरा चरित्र समझते हैं, इसीलिए मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर बार ज्यादा जिताते हैं और हर बार चुनाव में ज्यादा सीटें मिल रही है। और आप ऐसे ही निगेटिव बने रहो, आप ऐसे ही निगेटिव बना रहो। और आप, विश्वम जी ने, हमारे मित्र है विनय विश्वम, एलावरम करीम, तो हाँ, विनय विश्वम नहीं, एलावरम करीम। तो एलावरम करीम ने कहा कि 25% हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बढ़ी। अरे आप जिस सरकार को, यूपीए को पहले टर्म में सपोर्ट करते थे, उस समय, जैसे आज एक जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 22 महीने डबल डिजिट में लगातार 9 साल ये फूड इन्फ्लेशन मोर देन 10%, 9 साल, 10 साल में से 9 साल। और उस समय इतने दाम बढ़े, तब तो कभी आप बोले नहीं। और उसका दूसरा एक मुद्दा है कि जब प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर पूछा उस समय, तो उन्होंने फेमसली कहा था कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। आपने जो 1,33,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स तैयार करके जो उस समय ऑयल के दामों में एक कमी लाने का किया, स्थिर रखने का एक प्रयास किया, उसका भुगतान एनडीए सरकार को करना पड़ा, वो भी किया हमने। ये भी एक समझ ले मूल। अच्छा, कुछ तो परिस्थिति होती है। अब कोविड आएगा, दुनिया को ऐसा छाएगा, ये किसने कल्पना की थी? तो कोविड में और यूक्रेन का वॉर, अब 5 लोगों को लगा था 5-6 दिन में चलेगा, लेकिन 5 महीने हो गए तो भी चल रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, वहां अनाज का भी भंडार है
और वहां गैस का भी भंडार है। सारे ऑयल और गैस सेक्टर के प्राइसेस दुनिया में बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए। इट इज द फैक्टर्स बियॉन्ड एनी कंट्रीज कंट्रोल, और इसलिए ये रेट बाहर दुनिया में बढ़े हैं, सबको बढ़े हैं। केवल भारत में बढ़े होते और बाकी जगह नहीं बढ़े होते तो लोग कह सकते थे कि भाई ये आपने गलत किया। एक मिनट, बांग्लादेश हमसे कम है। एक मिनट। अभी बहुत लोगों ने, मुझे समय भी कम लेना है और मुद्दों की बात करना है, बहुत लोगों ने रुपये के डेप्रिसिएशन पर चिंता जताई, लेकिन मैं फैक्ट्स थोड़ा बताना चाहता हूं कि डॉलर, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में भी एक कहा कि रुपये का एप्रिसिएशन विद इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज भी हुआ है, ये भी हमें समझना भूलना नहीं चाहिए। और एक मिनट, वही बता रहा हूं, Don't comment. एक मिनट, You will have opportunity. उसका उत्तर भी एक किसान ने दिया है, वो मैं आपको दूंगा लास्ट में। They will bring those points. लेकिन डेप्रिसिएशन भारत के रुपये का विसावी डॉलर 7.5% हुआ, जापान का 20% हुआ, यूरो का 13% हुआ। यह भी हमें समझना चाहिए, ये इट इज नॉट जस्ट एन इंडिया प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वी आर फेयरिंग मच बेटर देन अदर कंट्रीज। दिस इज अ पॉइंट विच आई वांट टू मेक। बांग्लादेश इज बेटर देन यूपीए के जमाने में 9 साल मैंने कहा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा। अभी हमारे 8 साल में, 5 साल में 5% के नीचे रहा, 2 साल 6% के आसपास रहा, और इसी साल 7% हुआ है। यह भी हमें समझना चाहिए, और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम फूड सिक्योरिटी। मैं 2017 के चुनाव में मणिपुर गया था, इंचार्ज था, तो मैं सभी लोगों को पूछता था, आम आदमियों को भी, कि किसको वोट देंगे, तो बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों, तो बोले उन्होंने हमें चावल 3 रुपए में दिया है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 3 रुपए में चावल, तो पहले फूड सिक्योरिटी में, एक मिनट, नहीं मैं वही बता रहा हूं, फिर ऐसा है 3 रुपए में देने का फूड सिक्योरिटी में यूपीए ने निर्णय लिया था, लेकिन पूरे देश में वो नहीं दिया था। यूपीए के जमाने में 40 करोड़ लोगों को केवल फूड सिक्योरिटी मिलती थी, हमने वो 80 करोड़ को की है। ये एक बदलाव है, ये हमें समझना चाहिए। पॉवर्टी कम हुई, पर कैपिटा डबल हो गया, पर कैपिटा इनकम एज डबल, वो आंकड़े हैं, दुनिया के आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर्स जो थे 12 लाख डॉक्टर बढ़े, मेडिकल के सीटें केवल 50,000 थी, वो 80,000 से ज्यादा हुई। सोलर एनर्जी, yes, because all this, the development requires money, and money doesn't come by printing notes. It is, you have to generate resources. That is मूल मुद्दा है। और फूड ग्रेन जो 255 मिलियन टन था 2014 में, आज 316 मिलियन टन है, ये भी हमें समझना चाहिए। उपाय क्या किया सरकार ने? आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए, मार्केट में डिमांड को और जो वोलेटिलिटी है एक तरफ, वो भी कम करने का कोशिश किया, और प्राइसेस, इन्फ्लेशन ज्यादा न बढ़े इसके लिए प्रयास किया। 9 करोड़ उज्ज्वला गैस वाले महिलाओं को 200 रुपए की सब्सिडी हर सिलेंडर पर दी है। व्हीट एक्सपोर्ट रोका, बेटर पीडीएस के कारण लोगों के हाथ में अनाज जा रहा है जो पहले चोरी होता था। एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ की एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया है कि किसान को उसी दाम में खाद मिले। ये छोटी चीजें नहीं है,
ये पैसा लगता है तो महत्वपूर्ण है ही। ड्यूटीज, स्टील के दाम बहुत बढ़े थे, घरों के कंस्ट्रक्शन के दाम बढ़े थे, स्टील के दाम कम करने के लिए भी एक्सपोर्ट का ड्यूटी भी बढ़ाया, इंपोर्ट का ड्यूटी कम किया, सब किया, और ये करके ये प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी लाई। आखिर हमारी आज इकोनॉमी की सत्यता क्या है? आईएमएफ का जो रेगुलर रिपोर्ट आ रहा है उसने भी कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में इंडिया सबसे आगे है। इंडिया सबसे आगे है, 6.8%, ये उनका लेटेस्ट। हाँ, जैसे रेसेशन दुनिया में, अमेरिका में आज चर्चा हो रही है। अमेरिका के कोई भी समाचार पत्र खोलो, वहां रेसेशन की चर्चा है, स्टैगफ्लेशन की चर्चा है यूरोप में। लेकिन अपनी यहां नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं गए हैं, बचाया है इकोनॉमी को। फॉरेक्स, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में कहा, आधा तो जवाब उनका उसी उत्तर में हो गया है कि फॉरेक्स भी हमारा $500 बिलियन के आसपास है ही। फिर आईटी रिटर्न 6 करोड़ हुए, 14 में 2.5 करोड़ थे। आज, अरे हाँ, बट 2.5 करोड़ थे 130 में, तो अभी 6 करोड़ हो गए, ये फर्क पड़ा है। स्पेक्ट्रम में जो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पुराने रेट पर दिए थे, वो कैंसिल होने के बाद नीलामी होकर 1,80,000 करोड़ आए, और अभी जो 5G स्पेक्ट्रम हो रहा है वहां भी 1,45,000 करोड़ आ रहे हैं। तो ये भारत की सरकार की सोच का फल है, और जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। रोबस्ट एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, और इसलिए मैं 2 ही चीजें अंत में कहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि महंगाई और उत्पादक को मिलने वाला प्राइसेस ऑफ एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स आर लो इन इंडिया। मैं ऐसा मानता हूं, काम करने वाले को अधिक पैसा मिलना चाहिए, और मोदी सरकार ने एक बढ़त लेकर 10,000 रुपए से कम वेतन नहीं किसी का होगा, ये तय किया, लेकिन ये और भी बढ़ाने की जरूरत होती है। तो ये बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। रिसोर्सेज का सरकार के पास एक ही रास्ता होता है, टैक्सेशन। वो रीजनेबल हो, वो अन्यायकारी न हो, गरीब को कम, अमीर को ज्यादा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और पॉवर्टी का भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में विषमता बहुत बढ़ गई है। तो सिंपल चीज है, 47 के और आज के आंकड़े हमने देखे, 47 में अगर ऐसी विषमता थी, ये लोअर एंड और ये हायर एंड, अभी ये भी इधर आए हैं और ये इतना हुआ है, ये फर्क हुआ है। यानी गरीब का स्तर ऊपर आया है, गरीब का स्तर ऊपर आया है। गरीब के जीवन में फर्क आया है, और यही उद्देश्य है। और इसलिए नहीं, बैठिए ना, मेरा समाप्त हो रहा है, बैठिए, आई एम नॉट यील्डिंग, बैठिए। तो इसलिए महंगाई के संकट का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किया है और वो करती रहेगी। जो नहीं, महंगाई ये दुनिया में है क्योंकि हमारे हाथ में जो नहीं था, वो 2 संकट हमारे सामने आए हैं। लेकिन हम एक विकास के गति में जा रहे हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं, और
आर्थिक व्यवस्थापन भी अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Javadekar. You completed your speech before time. I request all the members to take his example and complete their speech before time. Now, Shakti Singh Gohil. महोदय, That is his party time. मैं प्रतिशोध की राजनीति का भोग बने हम, पर हमारी दिक्कतें महत्व की नहीं है। महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का। इसलिए मेरे नेता और लाइक माइंडेड पार्टीज ने तय किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहां आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था। आपका कहां से रहेगा? मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया, 7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 26 रुपया 17 पैसे प्राइस थी, वो 14 1 मई को और 22 1 मई को 35 रुपया 85 पैसा, 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं 20 रुपया 5 पैसा था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने, बड़ा लंबा लिस्ट है। मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी कुछ वर्ड कॉइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने कॉइन किया टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप। और ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने। ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं आपको यह कहता हूं, आपके जरिए महोदय, वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे लोग निकले, उस जेएनयू की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस जेएनयू का बहुत समर्थित हूं। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय
एक कांड होता है महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था, और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पहुंचने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात नहीं, मैंने जब आज के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है, और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महंगाई से परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब, माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे ट्राई करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था, और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी, माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था, तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी, उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए,
उस 3 साल का एवरेज कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल, और हम कितने में देते थे? कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। आप ये 1 सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो। हम कहां से धोएंगे? कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था। वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि 1 पैसा कम नहीं किया था वैट का। आज आप महाराष्ट्र की दुआएं देते हो। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिखाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है, ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 लाइनें। आपका टाइम ओवर हो चुका है। बस एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय वाजपेयी महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से, बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्रायन। This is the story. This is the story of a young couple. They get up. This is the story of a young couple. They get up in the morning, quickly brush their teeth. 18% GST on toothpaste. Then the man rushes in for a shower, a bath, bucket bath. Again, 18% on the soap. So while they're getting ready, someone hits on the door. The LPG man is waiting outside. Oh, give me some 1200 rupees. Then, sir, on the scooter to work, petrol prices, you know what it is, sir. While they're rushing, they quickly stop because the child has got an exam tomorrow. So pencil, eraser, all to be bought. They're also not, children are not spared. 18% on the kids. Sir, then office time, some murmura, what we call in Bengal, mudi for a snack, not spared. 5% on that, sir. Then they go to office. The man goes to one office, his wife goes to another one. They realize the neighbor's wife has to be taken to hospital, not spared 5% GST for the room. Bad day, sir. The lady calls up, tells her husband, I'm going to the bank. Bank, 18% on the checkbook. Sir, by the time they come home, they stop for the tomatoes, up by 145%. They are exhausted. They're back home, sir. And the lady and the man are quite exhausted, but the man says, Modi hai, to mumkin hai. And the lady, and what does the lady say? Lady's Hindi is not very good, so she says something in Bangla. Chire muri batasha, Modi shah tamasha. বুঝেছেন? Chire muri batasha, GST tamasha. Sir, I can't translate that. That is not translatable. Okay.
Sir, let's come to first three numbers. I have three numbers for the finance minister, and I have 6 direct points where I want her response when she responds. What are the three numbers, sir? Let me explain. The first number is 20. The first number is 20. Now, 10 years ago, when cess was collected by the government, of the total cess and surcharge collected, 10% was cess and surcharge. 10 years ago. Now that number has gone from 10 to 20%. That means the central government is sucking from the states. Instead of 10, 20%, that figure is 4.81 lakh crores. So my first one to the finance minister who will respond is, you are doing this, and you are doing this for all. For petroleum products, don't talk about petroleum products. 2/3 of the cess, of the total taxes, cess and surcharge, is collected by the center. So stop this argument of 5 rupiya ye, 6 rupiya ye. 2/3 is collected. Sir, that's the first response. And what is the number? 20. Second number, sir, we all know. Retail inflation. Retail inflation, 6 we say, RBI says 6 is fair, okay. Last 2 quarters, retail inflation has been 7. Trouble, retail inflation. So 20 plus 7, keep that in mind, 27. And my third number today is 29. Why 29, sir? Berojgari, unemployment. 29% of youth in India do not have jobs. 29. 1 out of 3 do not have jobs. The FM must respond. 7,22,000 people have got jobs. What is my source? Lok Sabha answer a few months ago. 22 crore applied. Berozgari, 20, the number who got was how much? You saw, sir, 7 lakh. Now that is my third number. 20, you're taking from the states. 7, the retail inflation. And 29 is the youth unemployment. In the response, I would like the finance minister to dispute all these numbers. Sir, but the interesting thing here, and it's very, very interesting, if you add the 3 numbers up, 20, 7 or 29, एक number मिलता है sir, 56. 56 inch, sir. So 56 inch is the number we can all understand, if you know what I mean. 56 inch. Right, sir? The finance minister is quoting Raghuram Rajan on the floor of parliament. The finance minister, I'm sure she hasn't been well, and I wish her a speedy recovery. I'm sure she'll come back to listen to the second part of my speech. It's good, sir, when the finance minister walks out, you know I get under their skin. Right, sir? मैं भी walk out करूँगा ना क्या? हाँ. Raghuram Rajan made that speech. Don't selectively quote Raghuram Rajan. After he said what he said, and that was the point of his speech, we must confront and defeat, quote, we must confront and defeat majoritarian authoritarianism, unquote. Falling rupee. Everybody knows about the falling rupee. I have one straightforward, this is my third response in the answer. Straight to the finance minister. 28 times we know the rupee has jumped up. Inflation, sir, is at 7%, right? Now listen to this. In the US, inflation is 9%. India, the inflation is 7%. If in the US the inflation is 9%, India is 7%. Undergrad economics will tell you the rupee should be appreciating to the dollar. Why the finance minister is the rupee depreciating? Because in the US, 9% is peaked out. Right, sir? Let's come to one more. Again, a response from the finance minister. So when the opposition MPs speak, we also know how to make political points and economic points. Give us a chance to speak. Sir, here is the number, my fourth response in her response today. LPG,
2019-20 2019-20 में एलपीजी सब्सिडी कितना था? 24,000 करोड़। 2021-22 वो 24,000 करोड़ का सब्सिडी कितना कम हो गया सर? 2,400 नहीं, सिर्फ 240 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर आइए, आपका रिस्पांस में इसका जवाब दीजिए। सर जीएसटी, first point on GST, members are getting up here from the treasury benches, misleading the whole house, misleading the whole country. GST में ये बोला था, all the states agreed, not at all. Supreme Court has said GST is only a recommendatory body. Let's be very, very clear about this. Nothing is binding, it's advisory. So don't make this argument, it doesn't work. Sir, my next submission to the finance minister. Sir, GST was introduced in 2016. States were assured of compensation for 5 years. States have now written saying that COVID was so bad. Yes. Have you considered the demand of the states to increase the compensation from 5 years to 8 years or 9 years or 10 years? Give us an answer on the floor of this house. These are the real issues. You can't go on Noida TV channels and divert the issues with minor. This is the real issue. Price rise. We're talking about price rise. Let me come back, let me finish GST. So what you're really doing is 1.5 lakh crore compensation over the next 9 months. Where is the states going to generate this money? And my last point on GST is, since I had the good fortune of being a member of the select committee, my party, the All India Trinamool Congress, put me there. Now, if the select committee and in the law, that time the revenue neutral rate was 16%. Based on that, all the GST was calculated. Now, the revenue neutral rate is down to 11%. Why? Why? Because you've taken away 250 items, which were luxury items, and brought it down, and you've gone and taxed toothpaste, muri, etc. So that is the problem. They have to fix this, sir. Because if you don't fix this, then I'm afraid this will be the death of federalism. घास पे? अच्छा. Sir, 4 quick points. The opposition, my party, the Trinamool, and there were others as well, we took a very clear view on GST. Idea great. August 2016, check the records in Parliament. We warned you, implementation is the key. And you made a complete hodgepodge of implementation. Next, we warned you, November 2016, 45 minutes after the Prime Minister announced demonetization, one lady, Chief Minister of Bengal, said, withdraw this draconian anti-people decision. Who did that? You didn't listen. Farm laws, you didn't listen. COVID handling, you didn't listen. Sir, come down with the arrogance through you to the Prime Minister and listen to what we have to say. Sir, we've heard a lot of talk about ye diya free, wo diya free. Itna diya free to Bengal mein itna kyun har gaya? Kyun har gaya? Main bol raha hu kyun har gaya? So my time. Sir. Please, honorable member, please, come on. Sir. Please. Sir. Please, Chowdhury. honorable members, please. Sir. Please. 14 महीना हो गया, लेकिन अभी भी जलान है यहाँ. Please address Sir, the what to chair. do? Yeah. We'll have to conclude 1 minute. Sir, why 1 minute, sir? You've taken away 3 minutes. 3 minutes. Sir, this is it. Please. The second largest opposition party here is speaking. You're saying I've got 1 minute to speak. Sir, what is this? It's on the board. Sir, let me make the point. I've only got 3 very short points. I must respond to them so they know why they lost. Now, because they think they win everything. मैं बताता हूँ. वो बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता दी, वो जो बोलती है, keeps her word.
chawal, rice, free. Rohu, free. Dawai, free. Ilaj, muft. माँ कैंटीन 5 रुपए में खाना. किसान इंश्योरेंस, सर किसान के 1 पॉइंट किसान में. हाँ, किसान में बंगाल का मॉडल आप लोग सीख लीजिए. किसान का इंश्योरेंस. Sir, protect me. Sir, protect me. Honorable members, please. Kisan, no, sir, I need protection. Please, honorable members. Manya Director ji, please. It'll only delay it further. Sir, please. Sir, Please, sir, everyone. if I may. Two MPs stood up in their seats in the morning, the House got adjourned. Sir, please, protect me. No. Please. Sir, We'll have to conclude. Kisan, I'm giving me 2 minutes, I'll conclude. Kisan insurance, the farmer does not have to pay the insurance. And I can go on with Lakshmi Bhandar, Kanya Shrideep. Sir, I have 2 more points to make. One more point, sir, one more. Please. There's no point. Yes, sir. I've made 6 clear points where I would like the finance, sir, 1 second, where I would like the finance minister to respond. Sir, the bigger point, why have we had to wait? Please. Honorable members. Let him conclude. Please This is not on. Honorable members. I seek your protection. Please, ये ऐसे ही चलेगा फिर और 4 मिनट आपको चाहिए. Please, let him conclude. He is about to conclude. Please. Sir, price 6 point बोला जवाब दो ना. So, sir, the bigger issue, we've discussed price rise, hard points, we've discussed GST. Now, why did it take us 38 days to have this discussion on price rise? Sir, just 1 minute. Because we appeal to the government and genuinely appeal as a constructive opposition. First, you have to acknowledge the problem. If you're not going to come here to acknowledge the problem, how can you fix the problem? Because you will throw 25 MPs out, you will not allow a discussion, and then what happens? Parliament, what is Parliament? Parliament is a congregation of people fighting for the Constitution. So what they did is remove Parliament outside. Please conclude. Sir, they removed Parliament outside. And the congregation of people, we are still fighting for the Constitution. Sir, I want to end. Thank you. I want to end with quoting a very important person. You'll allow me 2 small quotes. And I'm looking forward to short quotes, not Quickly. 2. Sir, because I've made 6 points for the FM, but these are 2 quotes, and it's somebody all of you respect. Here we go. 1. It's on the rupee. Quote, rupee is not losing strength because its size has changed. It is because those sitting in Delhi are busy in corruption. Unquote. Sir, this is a quote. Please conclude. Director, please conclude. I didn't. Why are they fighting with me? Conclude. Please, honorable members. हमसे क्यों झगड़ा? Please, honorable What is this, members. sir? Please, I'm requesting you. Please. आप लोग भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं. Please. Don't cross talk. Please. Sir, Please. I've got one. Conclude. So I don't know why they're getting upset. It's somebody. Last quote. Last quote. This is July 2013. Please. Narendra Modi. Why are they getting upset? Conclude. Mr. Prime Minister, we agree with you. Now my second quote. On price rise. Quote, common people are being affected. Let me finish, sir, without a disturbance. My last quote. Quote, common people are being affected by rising prices, but the insensitive central government is making a mockery of the suffering of the poor. Unquote. Mr. Modi, September 2023. Please conclude. All I want to say to both these quotes, September 2013. Thank you for correcting me. He said this in September 2013. All I want to say for these 2 quotes is, Mr. Prime Minister, we completely agree with you. Thank you. माननीय श्री तिरुचि शिवा जी. Thank you, Mr. Vice Chairman, sir. Sir, I would like to start from
where my friend Mr. Derek concluded his speech. In the year 2014, during the Lok Sabha elections, the then Chief Minister of Gujarat, who aspired to become the Prime Minister of India and now the Prime Minister, lambasted the then government, that it was a weak government and it reflects in a weak rupee. And he also accused that government UPA failed in all ways. Assured of, if I am right to quote, Acha Din, that is good days, will come. But now the worst days are here. The country has never witnessed such a critical situation before. In the past 50 years, the unemployment has critically gone down, very much bad than ever before, all because of this government's policies. Sir, I expected the finance minister to be here. I think some other works might have compelled her to be out. But I want to tell her, yesterday when she was replying in the Lok Sabha, she was replying to the members of the DMK and other people who criticized the government for not having controlled the price rise and the petroleum prices. And in the course of her speech, she said that the DMK during the election campaigning gave a manifesto and it has not fulfilled its promises of reducing the petrol price and all. Sir, I would like to submit through you to this government as well as to the finance minister. She knows pretty well, but she spoke to the gallery. We expected something else from her. In 1 year, the DMK government, headed by Mr. M.K. Stalin, has fulfilled 70% of the poll promises. We have yet more 4 years to cross. And we have reduced the petrol price by 3 rupees. And we have reduced the milk price by 3 rupees. And we have done a very, very well. See, this government, because of these policies, I was about to come to that in the later part, but statistics very clearly say that the sex ratio of women have increased, but their anemic ratio is increasing very much. And the nutrition of the children are down to the level. Infant mortality is more. So, sensing all these things, in Tamil Nadu, sir, other than the nutrition meal scheme in the afternoon, we give also breakfast to the children in the school. That is a very progressive one. And everything that happened is only because of this government's policies. Everything. During the election, let me ask. She is challenging us in 1 year whether we fulfill the poll promises. Let me ask them, it is 8 years you have completed. Have you fulfilled your poll promises which you gave in 2014? You said that black money will be totally unearthed and 15 lakh cash will be deposited in every citizen's account. Have you deposited? Have you deposited? Later, you yourself. It was Jumla. Later, I'll tell you. Later, your own Home Minister, Honorable Amit Shah told it's a Jumla. Jumla means empty promise. Empty. So, political promise. Whatever be I don't know the meaning of that word. So, you gave an assurance, but you are not fulfilled. Father, you yourself said it is an electoral promise. So, you have cheated the people. You have misled them. And you said every year you will give 2 crores of employment to the youth. But now as I said in the beginning, the unemployment has soared high. And next comes the demonetization policy. And the highly flawed demonetization policy which was imposed upon the people all of a sudden, which devastated the MSM sector, the informal economy, and the whole economy of this country. And what the Prime Minister told when people were agitated, just in 50 days, if it is not set right, you hang me. Did he not tell that? You punish me, he said. But years have rolled by. The crisis caused by the demonetization and the adverse impact on the economy and the MSME sector and the poor people still continue.
So whatever you have done are only flawed. The GST, again to say, the GST has increased the basic prices. And Derek was quoting about a couple, a man and a woman getting up in the morning, getting ready to go to office, going out, what are all the expenses. Let me tell you one more thing, my dear friend. A person dies, he is no more. He is taken to the crematorium, there he has to pay 18%. 18% GST in crematorium. Honorable member. How sad? How sad it is. So also the petroleum prices. They cannot justify it, showing this and that reason. See, when the UPA was in power, the oil prices and the petrol prices in our country. Just a small comparison. Because we are not just evasively making comments or making accusations like the others do from that side. In 2011, the oil price was at the highest, 111 rupees 89 paisa, when the petrol price was only 58.5. That was in UPA. And when it demitted office, the oil prices have come down to 84.16 and the petrol was 72.26. When they took over, it was the same. The very next year, the oil prices in the global level came down to 46.17 rupee, but here, dollar, and here the petrol price was 60.49. It was not proportionate. When the oil prices come down, it should be transferred to the consumer, but it was no. Rather, the petrol price was hiked. And slowly coming like that, today, the oil prices are $121 per barrel, and the petrol price is 105.41. Sir, again compare UPA 111.89 oil price, the petrol price was 58.5, and now only 121, just 10 rupees, $10 more. The petrol price is 105.41. So you are actually accumulated. In the past 3 years only, the government has earned, as per the reports or the statement given by the finance minister, 8.71 lakh crore has been earned by way of petroleum prices hiking. Whom does it affect? Not the corporates. Actually, they are benefited. Whatever you have the money, you are waiving off the corporates' loans, telling that we are augmenting the incentives. No, but you are increasing their profits. During the pandemic, the whole country was suffering. Everyone. Because of the non-planned implementation of this lockdown, what happened? The migrant workers, they died, they lost their jobs, they were starving for food. Many people were suffering, so many were left unemployed, whereas the corporates' profit increased to 22% than before. Because of your incentives. You take care of them. A minimum standard of living, you have to assure the people. That is the basic duty of a government. Minimum a standard of living. What do you say in Hindi? Roti, kapda, aur makan. Makan. But that is not. But even that is not so. Sir, I would like to say, the RBI very clearly say the consumption level has declined from 100 figures to 72 figures. People are not able to buy. The expenses people are spending for their food in the rural areas, please. Rural areas have come down very badly. They are not able to eat. Their calorie intake is coming less. I would say, sir, the indirect tax, what the low income group people is giving, that is what the high income group, the corporate is also giving. The direct taxes income is only 54%. The rest 46% are given by the ordinary poor people. You are taxing them. You are breaking their backs. They are not able to survive. Essential commodities price go up. The poor people, see what you call Ujjwala? What is Ujjwala? You are given stoves, but the gas price has gone up. 1,000, more than 1,100. They are having stoves, but they cannot buy gas. Women are starving. The family heads are something. I got a lot to say, sir, but I have to confine to the time which I have been limited to. This is the situation in this country.
They are not bothered. They only give excuses. The fall in the depreciation of the rupee value. You cannot compare the other countries. You cannot say that person is sick, I am also sick. You have to be healthy. So the government has to take action how to bring back the rupee value to the country's needed level. It is not doing so. Whereas the forex reserves in the Reserve Bank of India has come down by 4 lakh crore rupees to shore up the Indian rupee. What more you have got? You are benefiting the corporates, punishing the poor people. This is not the right gesture of a government. Sir, she is not here, but I would like to conclude since my time is up. I think she would come to know because she used to quote from Tamil Tirukkural, Purananur and all. I would also like to quote one Tirukkural. Kodayali Sengol, Kudiyombal Nangum, Udayonam Vendarku Uli. Means, I would say in Tamil first, தேவைப்படுவோருக்கு தேவைப்படுவதை தருவது, அடுத்தவர்கள் கருத்தை மதிப்பது, நல்லாட்சி நடத்துவது, எல்லாவற்றிற்கு மேல் மக்களை பாதுகாப்பது, இந்த நான்கும் உடையதே அரசருக்கு அழகு. Let me tell in English. You have to give the poor what they need, number one. Number two, you have to lend your ears to the views of those people who oppose you. Number three, a perfect administration, a good governance and care of the people's weal are the qualities of a real king. Do you do that? You are not taking care of the poor people. You are not lending your ears to the opposition's criticism or comments or anything which we say. However, it may be genuine. Your administration is not also good. You say minimum government, maximum governance. But now maximum government, but minimum governance. Thank you very much. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी, आपके 2 स्पीकर्स हैं, समय उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद मान्यवर, आपने महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जिस महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है,
मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही है मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद यह सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है, मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर, मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं, मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है। विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया, आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है मान्यवर। इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास? क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास? इनसे सवाल पूछना चाहिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए मानो, 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता, देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। माननीय, मैं कहना चाहता हूं, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट एल्डिंग सर, I am not yielding. Sir, 1 minute. Sir, I am not yielding, sir. I am not yielding. Let me complete, sir. सर बस खत्म कर रहा हूं सर। कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद I'll take the point. ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मान्यवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में मान्यवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के सांसद। नहीं सर, आई एम नॉट यील्डिंग। इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। तो he has a point of order. नो सर, नो, आई एम नॉट यील्डिंग। अब बात खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट। सर, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है सरकार। एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 1100 प्लीज, 1 second, 1 second, अंडर विच रूल, 1 second, 1 second, सर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसी चेयर से कहा गया सर। 1 second, हमारा टाइम आप देंगे सर। 240 नो सर, प्लीज प्लीज चेयर से बोला गया। I'm allowing the point of order, point of order. सर नहीं बोला गया। नो सर, 1 second, point of order, 240, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं ले सकते सर। जब ये बोल रहे हैं सदस्य कैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले सकते हैं? Irrelevance or repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, can I ask the member to discontinue the speech? Sir, most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the council, sir. Taking your point is taken. Sir, a lot of what has been said does not pertain to the I'm subject. taking your point. You made your point. You made your point. Made your point. Please sit down. बैठ जाओ सर। He's concluding. बस खत्म। Please,
माननीय सर इसी conclude चेयर करिए। से कहा गया था Conclude। एक सदस्य बोलता रहेगा तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। सर खत्म कर रहा हूं। Conclude करिए। सर मैं ये कह रहा हूं कल तक मैं ये ये कह कानून रहा हूं नहीं ये था ना। सरकार कल तक ये दूसरा कानून था। हाँ ठीक है बैठ जाओ कंक्लूड करिए, कंक्लूड बैठ जाइए खत्म कर रहा हूं। कंक्लूड करिए। सर मेरा समय खा रहे हैं लोग। सर गुजरात में एक बिल्डर की सड़क बनवाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने। कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। ये बिल्डर्स की गुलामी कर रहे हैं। प्लीज कंक्लूड। थैंक यू। विजय साई रेड्डी जी, श्री विजय साई रेड्डी जी, यस प्लीज। Please. Thank you, Vice Chairman, sir. Some of the members, honorable members of this House, quoting wholesale price index. Please, silence, please, in the House. Silence in the House, please. Honorable members, please do not look behind. Honorable members, please take your seat. If you do not want, Mane Derek ji, please, thank you. Honorable members, please leave silently. Sir, during the 1 second. During the speech of the honorable member, there was a reference made about a member of the other house. So you may please We will examine it and then We will examine it. Honorable Shri Vijay Sai Reddy ji, please, Shivaji. Honorable, please. Shri Reddy has already started. Please. Sanjay ji. Please, Shri Reddy ji, please commence. Please, everyone. Honorable members, please commence. Please, honorable Vice members. Chairman, sir. Please. Some of the honorable members have quoted wholesale price index to be the parameter to prove the inflation, which is at 15.1%. According to me, the people do not buy the goods wholesale. It is only consumer price index is the right measure to judge the inflation, which is 7.1% in June 2022. Sir, it is undoubtedly high. It is not justifiable. 7.01% is unjustifiable, is definitely on higher side, and it is still lesser than, it is 7.0, I'm not justifying 7.01%, but it is still lesser than 10.4%, which was the inflation rate during Honorable Finance Minister Chidambaram time. Sir, RBI has got the mandate to keep the inflation within the limits with a median of 4% plus or minus 2%. I am asking the government, what is government doing? See, why RBI is not able to control the limits that it has imposed, 4% plus or minus 2% is the median. Sir, why this tolerance band has been breached? The entire RBI has further said the entire year for the remaining period, also the inflation rate would be well above 6%. This is the statement of RBI, sir. What is that the government is doing in this regard? Sir, inflation, according to me, inflation is a taxation without legislation. It is a taxation without legislation. Inflation, according to me, it's my own interpretation, is violative of Article 38 of the Indian Constitution. Permit me to read it in verbatim. Quote, the state, that is the central government, shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status, facilities and opportunities, unquote. So this is the responsibility of the government to control the inflation. According to me, the government of India, the present central government has failed to control the inflation. Sir, increase of price of essential commodities adversely impacts the poor of the poorest of the poor, sir, and the marginalized sections in the society. Sir, 1 lakh rupees in the year 2001 is now
equivalent to that of 27,000 rupees. See, this is the value of the rupee as of now when compared to 2001. Therefore, it is the duty of the government to ensure that socio-economic security, to control the prices by controlling the prices and enhance the quality of life. Sir, the government, I advise the government, Honorable Finance Minister, to go for control of inflation, adopting the means of controlling the inflation. One, cash reserve ratio. Cash reserve ratio, which is 4.5% at present, may be raised by 50 more basis points, and accordingly the inflation also will be controlled. The next is statutory liquidity rate. The statutory liquidity ratio is maintained at 18% as of now, and it can be increased by the Reserve Bank of India in case if it is required to the extent of 40%. Sir, therefore, I request the Honorable Finance Minister to adopt these two measures and thereby control the inflation, sir. Sir, labor participation. 4 more minutes. Labor participation. Sir, the trauma of migration in 2020, COVID, low wages, lack of social security, support system have caused the less migrants to return to the urban centers. Those who have left the work and then migrated back to their respective places have not come back to the urban centers and not joined the duty. This is one of the reasons for the less purchasing capacity of the people of the country, sir. Sir, as per the National Statistical Office, the labor force participation in the quarter January to March of 2022 stood at 47.3%, which is miserably low. Sir, March alone, it fell to 39.5%, shrinking the labor force to 3.8 million, and further, female participation stood at only 9%, meager 9%, which I am Honorable Finance Minister, I would like to Finance Minister to take care of, to take cognizance of this. Sir, the coal and petrol prices, which our honorable members have raised it. Sir, the price of the coal and oil prices have increased, the supply chain disruptions. Coal and oil prices have been 7 years high as of today. In the last 7 years, this is the highest. The growth rate on the production of coal by Coal India Limited and its subsidiaries shows the negative growth. Minus 0.98% is the negative. Sir, between 2019-20 and 2021. So this is the state of affairs. Sir, in fact, today morning, honorable member from DMK, Kanimali Somuji, has raised this issue, cess and surcharge. Sir, between 2015 to 16 till today, what states ought to have got, had it not been cess and surcharge, it would have been the central gross tax revenue, and according to the finance minister, the center is distributing 41% of the gross tax revenues to the states, which is not correct. If at all central government includes the cess and surcharge also in the gross tax revenues, the real distribution of taxes to the states is only approximately about 31 to 32%. And states have lost altogether 11.26 lakh crores, and Andhra Pradesh alone has lost about 46,000 crores in the last 7 years. This is the state of affairs, and the center, in other words, I can say that center is robbing the states by imposing the cess and surcharge. Sir, input costs. There is a slowdown of pace in the manufacturing sector. Broad-based slowdown in the growth across the number of measures such as factory orders, production, export, input buying, and employments as clients and businesses restricted spending amid elevated inflation. My time is over, sir. 1 more minute. Sir, chairman has to allow. Sir, please. Sir, it is by convention. It is by convention that the interest rates on small saving schemes, which Honorable Finance Minister is aware, should be 25 to 100 basis points above the 10-year bond yield
10-year Government of India bonds. The Government of India 10-year bonds yield has increased 140 basis points from 6.04% to 7.46%. Therefore, it is the responsibility of the government to increase the PPF rates also from 7.1% to 7.8%. And also Sukanya Samruddhi Yojana from 7.6% to 8.3%. And senior citizen savings scheme has to be, rate of interest has to be increased from 7.4% to 8.1%. You can't have two different logics for the same subject. So I request the Honorable Finance Minister to take cognizance of this. Sir, inflation is worldwide phenomena as of now. However, it is the responsibility of the government to control it. Just because there is an inflation in Germany, just because there is an inflation in UK and also in US, doesn't mean that India can justify the inflation. It is the responsibility. Our neighboring countries also, yes, there is an inflation. Sir, everything is covered. Now, as Derek ji has pointed out, everything except some exempted items, everything is covered under GST. Even Tirumala Ghat is also not spared. This I have raised several times. And Honorable Finance Minister is not. All the BJP members would go to Tirumala and then pray the God, but their God is also being taxed. Sir, with this, I conclude. I am thankful to you. I request Honorable Finance Minister to take cognizance of this. Thank you. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Shri Sujit Kumar ji. Shri Sujit Kumar ji. Why, John? Please. Thank you, sir, for permitting me to speak on price rise, a very critical issue facing our country. Sir, at the outset, I would like to acknowledge that these are difficult times not only for India, but for other countries as well. I quite understand and appreciate the predicament in which the Finance Minister is, Honorable Finance Minister is. She has to manage the economy in the post-COVID scenario. And we have the Ukraine-Russia conflict. We have supply chain constraints emanating from China. So I do definitely understand the situation. Sir, I would like to quote from an all-time favorite classic of mine, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Yes. It was the best of times. Yes. It was the worst of times. It was the summer of hope. It was the winter of despair. Now, sir, why is there spring of hope? Please. Because, sir, I firmly believe that the India growth story is intact. I firmly believe that we are poised to better growth, higher growth, thanks to the people of this country, thanks to their hard work, their resilience, and their creativity. Yesterday, in the Lok Sabha, Honorable Finance Minister, in a reply, mentioned that there is zero probability of India having recession or stagflation. And I share her optimism. Sir, despite this slowdown, we are still the fastest growing economy amongst the large economies. One might dispute about the numbers, whether it's 7.4, 6.8, 8.2, but still, sir, our growth is much better than most other economies, including that of China. Our exports have crossed $500 billion, a record high. Our GDP, government debt to GDP ratio is in the 80s, whereas for most countries, including US, France, most of the developed countries, it's in the 3 digits. So, sir, there are many reasons for hope, and due to paucity of time, I'll not have the opportunity to get into all of those regions. But, sir, I'll fail in my duty as a parliamentarian if I do not highlight the concerns of crores of Indian citizens who are today crying because of the burden of inflation or burden of price rise. And I promise you, sir, I'll speak only about price rise and inflation. I'll not get into foreign exchange reserves and other jargons of economics. Sir, today, the wholesale WPI, wholesale price index, WPI, for June 2022 is 15.18%, which was 12.07% in June of 2021. This is an almost 30-year high. Sir, CPI, Consumer Price Index, which impacts common citizen the most, remains at 7% for the third consecutive month, which is higher than the RBI's comfort of 6%. So for a common man,
CPI, WPI have no meaning. She is only concerned about her monthly budget. And in the CPI, when the food basket is 40% of the weightage, if the CPI inflation goes up, then it is the Indian housewife's kitchen that bears the brunt of this high inflation, sir. Absolutely. Sir, I'll give some examples. Price of Banaspati oil on 31st of May this year was 26.6% higher than the same day in 2021. Price of wheat was 14.3% higher on 31st of May. I'm talking about 31st of May 2022 compared to 31st of May 2021. Same for sugar, same for mustard oil, etc., sir. Even domestic cooking coil today has crossed almost 1100 rupees. Petrol prices have gone beyond 120 rupees in most Indian cities. Sir, we all agree that price rise or inflation affects the poor and the middle class the most. Sir, I'll read out a report. I'll talk about a report from Oxfam titled Profiting from Pain that concludes that every 30 hours a billionaire is born, while nearly 1 million people are pushed into extreme poverty because of inflation. The system is such that inflation, particularly in a post-COVID scenario, makes the poor suffer and the rich silence, gain. please. Silence. Sir, please. Sir, today I had the opportunity to ask a supplementary question today morning during question hour on the prevalence of dubious loan apps. And I gave the example of these apps, loan apps, digital loan apps having connections to China, and how there have been 1.5 lakh downloads in the state of Odisha alone. I do not have the figures for the entire nation, but this tells us how people have now started borrowing money to meet their monthly budget. I'm afraid, sir, people will get into a debt trap if this continues. If the price rise continues, bulk of India's middle class and poor will get into a debt trap. Yes. Sir, this inflation is killing the dreams of our youth, particularly when their income is falling, when they do not have better job opportunities, when there are no livelihood opportunities. Honorable Member Bijay Saidji spoke about Article 38, and I agree with him. Sir, Please. Sir, senior members though Article 38 of the Constitution is part of the directive principles of state policy and is not justifiable by the court, I think it is the bounden duty of the government to tame inflation. Because, in my view, and most economists agree, that this inflation is caused not by demand. It's not demand-driven. It's not because of rise in wage, but it's largely because of supply constraints. And, sir, here I would like to bring to the attention of the House a social media post by Department of Economic Affairs at Ministry of Finance in April 2022, and it states, and I quote, "Evidence of consumption patterns suggests that inflation in India has had less impact on lower income groups than higher income groups," unquote. Sir, can it be more bizarre and callous than this? All of us know that inflation affects the poor and the middle class. But this social media post tries to portray the picture that it's not the case, it affects the rich class. Sir, as if the existing inflation was not enough, now there is an additional burden of 5% of GST on many packaged items of food like paneer, curd, atta. Sir, I agree that this was not the decision of Government of India. Rather, this was the decision of the GST Council. But, sir, and GST Council has representation from all the states, I do concede. But, sir, wasn't this hike made by the GST Council on the recommendation of the group of ministers? So, should the group of ministers not have recommended to the GST Council that this is not the opportune time to have a hike on these packaged products? Honorable Member, please conclude. Sir, give me 2 more minutes, sir. Sir, Honorable Member Shivaji spoke about the nutritional impact on child. And this is very close to my heart, sir. So please, I ask for your indulgence.
Sir, the inflation, the price rise has had a direct impact on the midday meal schemes. Sir, the schools, government schools, they get 5.42 rupees for each student from class 1 to 5 and rupees 8.10 for each student from class 6 to 1 to 5 and from 6 to 8 it's 8.10. Sir, we all know, can a meal be served at rupees 5 or rupees 8? We all know that a basic plate of dal, rice and vegetable curry will cost at least 15 rupees. So sir, what is the impact of price rise now? The quality of food served, the quality of midday meal has significantly got diluted, and our children, the children of this country are now getting served substandard food, low quality food. Sir, many times, Please even in this August, sir, 1 more minute, sir, even in this August House, I have argued vociferously about the need to implement Kothari Commission's recommendation, which was made way back in the 60s. The need to spend at least 6% of our GDP on education. We are half of that. We are currently spending 3% of our GDP on education. But at least the least we can do, sir, is to offer good quality food, nutritious food to our children as part of the midday meal scheme. Sir, time and again, Honorable Prime Minister has appealed to citizens of this country to come forward, to make sacrifices. People willingly made sacrifices. They gave up the gas subsidy. They made sacrifices during the COVID. But, sir, I think it is imperative that the government takes resolute action, particularly on the supply side, to tame inflation. Sir, the tax burden on petroleum product needs to be rolled back. Sir, MSP, we have time and again, my party Biju Janata Dal has time and again argued about the need to implement MS Swaminathan Commission on MSP, which has not been done by the government. Honourable member, you'll have PDS to has to be strengthened. Sir, last time is already sir, out. 10 seconds more. PDS has to be strengthened. Sir, the cartel has to be, dismantled. Competition has to be promoted. And finally, sir, we all know that we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise and inflation. Thank you, sir. Thank you. My point of order. सर पूरे सदन में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है स्पष्ट है लेकिन पूरे उसमें कोई पॉइंट नहीं. It's not a point of order. It's not a point of order. Don't raise that. It's not a point. Manoj Kumar Jha. सुजीत कुमार जो कंप्लीट हो गया. मनोज Jha. बैठिए. Sir, don't start my time. Sir, don't start my time. There is no point, sir. Please be seated. Manoj Kumar Jha ji. बैठिए बैठिए आप आराम से बैठिए दादा बैठिए Sir, शुरू करो नहीं आप मनोज जी बोले. Honorable Vice Chairman, sir. हिंदी में ही बोलूंगा. Honorable Vice Chairman, sir. मनोज जी हिंदी ही बोलते हैं. सर सर मेरा वक्त फिर से शुरू करिए. वैसे भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है. शुरू नहीं हुआ है. आपका वक्त शुरू नहीं हुआ. अब शुरू कीजिए. अभी तो शुरू नहीं किया. देखो टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है. नहीं क्या नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मेरा. यहाँ पर झूम के नारे लगा रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए. आज चर्चा के लिए कहाँ है वो लोग. ओके मनोज जी नहीं not you Mr. Sivarasan. Manoj, I have taken the name of Manoj Kumar Jha. Please
थैंक यू सो मच सर, वाइस चेयरमैन सर। खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूं बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा है। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर, can I have uninterrupted? Please. Let the members speak. Please don't disturb. सर, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए सर। बहरहाल सर, आई एम सिटिंग डाउन। No. Please sit down. Manoj Kumar Jha, do you want to speak? Please be seated. I have not taken your name. Mr. Chimdesan, I have not taken your name. I have taken the name of Mr. Manoj Kumar Jha. Please. Can I have I request all of you, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास में आइए। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। सब सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर, काटते जाइएगा 10 में 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर, ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर, एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी। सर, पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है। सर, कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर, मैं बार देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी, मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। सर, जब इन्फ्लेशन पे मेरा एसडीडी जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था। सर, मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजर्न हो गया। सर, मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं।
हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहें और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर मैं टाइम खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा, और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं सर। आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है, उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का, सर 1-2 मिनट और लूंगा, क्योंकि नहीं मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। आपका मैं तेल, सर बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की, मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है, उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं, एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं। अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई, अपनी वहां भी जीएसटी लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हो। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा। कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने, सर एक मिनट दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर। एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच, एंड बीइंग रिच माय वर्च्यू देन शैल बी टू से देयर इज नो वाइस बट बेगरी, सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी, गेन ही बी माय लॉर्ड फॉर आई विल वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा, और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि एश्योर करती हूं, मैं उनके एश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं
मैं सब धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप। मैं भरोसा करना चाहता हूँ, धन्यवाद मतलब आप खत्म करने का धन्यवाद। राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद। Honorable MOS will read out that Sir, I have made the BAC minutes will be read out by the Honorable MOS. I have to make an announcement regarding the BAC. I have to inform members that a meeting of the Business Advisory Committee was held today, the 2nd of August 2022, allowed time for government legislative business. The meeting was attended by some members of the BAC and special invitees. As there was no quorum, time for the government legislative business was tentatively allotted as follows. 1. Consideration and passing of the following bills after their introduction, consideration passing by Lok Sabha. That is 1. The New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, half an hour. The Energy Conservation Amendment Bill 2022, 4 hours. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. as and when necessary for the transaction of government legislative and other business. If the House agrees the recommendations of the committee with regard to time allotment to the bills and sitting beyond 6 p.m. to transact the business before the House may be accepted. Thank you. The sense of the House. Now, Sri Ramnath Thakur ji. आदरणीय पिताजी महोदय, आपने अल्पकालीन महंगाई पर चर्चा करने का समय दिया। मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बधाई देना चाहता हूं कि 16 रोजों के बाद महंगाई पर चर्चा के लिए हाउस नहीं चला। सरकार को मैं बधाई देता हूं और विरोधी पक्षों को भी बधाई देता हूं कि आपस में मिल करके आज चर्चा करने का समय दिया। उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी विचार का आदमी हूं। विरोधी पक्ष के जितने वक्ता बोले, मैं उन्हें सम्मान करता हूं और दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन महंगाई के रोकने के लिए जो सुझाव होने चाहिए किसी माननीय सदस्यों ने नहीं सुझाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था लोकसभा में कि जो सरकार महंगाई नहीं रोक पाती हो, नहीं घटा पाती हो, लेकिन जो दाम हैं, जो निश्चित है, उसको तो बांधने का काम करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, दाम बांधो नीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चलाया था, उस नीति को लागू होना चाहिए। मैं चावल, दाल, तेल, सब्जी पर जीएसटी लगा। मेरा सुझाव है कि विलासिता के सामानों पर आप जीएसटी लगाइए, लेकिन जो गरीब के लिए सब्जी, दाल, तेल, आटा, इस पर आप न लगाइए। मेरा सुझाव। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण करावे सरकार। महंगाई की जो चर्चा हो रही है,
16 रोजों तक जो सदन नहीं चला, इस सदन का तो कुछ मैसेज जाना चाहिए बाहर। सरकार ये सर्वेक्षण करावे, जांच करावे, सीमेंट बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, गिट्टी के बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, बालू के बिक्री में कमी आई कि नहीं कमी आई, मजदूरों के मजदूरी में कमी आई कि नहीं आई, कपड़े की दुकान कितने बंद हुए, दवा की दुकानें कितनी बंद हुई, सैलून कितने बंद हुए, होटल कितने बंद हुए, इसका एक आकलन होना चाहिए सरकार से, और यह निर्णय होना चाहिए कि महंगाई का एक कारण है। मैं सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में निःशुल्क बिना काम के अनाज दे रही है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, वहां से जो लोग आए, नौजवान आए, सब सरकार ने उनको बुलाया। बुलाने का खर्च आप देख लीजिए। एक परिवार में अब आने वाला है दिवाली, दशहरा, छठ, परिवार के बच्चे कहते हैं कि हमको दशहरा में अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, पत्नी कहती है कि हमको अच्छी साड़ी मिलनी चाहिए, छठ पर्व में जो सामग्रियां हैं हमको अच्छे मिलने चाहिए। क्या उस गरीब परिवार के गार्जियन सब पूर्ति कर देते हैं? नहीं करते, नहीं करते हैं। इसलिए महंगाई, गरीब की सोच रखने वाले सब मिलकर एक उपाय ढूंढना चाहिए और इससे निजात देना चाहिए। गरीबों में ऐसा मैसेज जाए कि हमारे लिए सोचने वाला कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बनना चाहिए। ठाकुर जी, बनना चाहिए। ठाकुर जी आप समाप्त कीजिए, इसलिए आपका समय। मैं क्या कहा साहब? आपका समय खत्म, समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कीजिए, आप भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं और इन शब्दों के साथ कि आइए हम सब मिलके शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के सोचने वाले लोग एकजुट हों और सरकार उसमें सहयोग करे। शोषित पर अन्याय नहीं हो, गरीब पर अन्याय नहीं हो, इसके बारे में सोचे समझे। और मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूं कि दाम बढ़ना चाहिए, महंगाई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मेरा मेडन स्पीच है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी, विनम्र अनुरोध कि मुझे कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जाए। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के उस झारखंड से आई हूँ
जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है, कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और न जाने क्या क्या, पूरे देश को सप्लाई करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस धरती के ठीक ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, अत्यंत ही गरीब। आज हम अपने माननीय राष्ट्रपति को लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आपकी तरफ देख रहा है, आशा से, बहुत ज़्यादा आशा से, कि निश्चित रूप से उनकी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस जीएसटी और महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई होगा, जिसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा, वो आदिवासी समाज ही है, जिसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और इस जैसे जितने भी गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश हैं, वहाँ की तमाम महिलाओं पर, तमाम बच्चों पर, तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं झारखंड की बात करूँ, चूँकि मैं झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूँ, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, और कई सालों तक काम करने का अवसर मिला, तो जो समस्याएं हैं उसे मैंने ग्रास रूट लेवल पर देखा है, बहुत करीब से देखा है और उसको मैंने समझने की कोशिश की है। झारखंड और उस जैसे प्रदेशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन की समस्या है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कितनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर्स जो अभी जेल में हैं, उन्होंने सिर्फ झारखंड से 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। वो लड़कियाँ क्यों अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में, असम में, हरियाणा में और न जाने कहाँ, पंजाब में जाकर वो अपने घर से दूर, परिवार से दूर वहाँ जाकर मेहनत करती हैं 2 पैसों के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। और उसमें अगर उस पर महंगाई की मार पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। और वहाँ जब उनको ट्रैफिकर्स ले जाते हैं तो उनको जो काम बोल कर जाते हैं वही नहीं, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का शोषण होता है। इसकी पीड़ा आप सभी जानते हैं और इसका प्रभाव हमारे देश के तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, तरह तरह के आदिवासी। हमारे झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, जो कि उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उनकी जीवन शैली, वो इतने गरीब हैं, अभी तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो अनसेफ माइग्रेशन है उससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं या पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, किताबें देने की बात करते हैं, हम उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितने बच्चे वहाँ जाते हैं? वो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है, उनका भविष्य कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें गरीबी की वजह से है, महंगाई की वजह से है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति अपना घर, अपना गांव छोड़कर क्यों जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारा पठारी इलाका है, जहां पर बारिश के दिनों में सिर्फ खेती होती है, बाकी महीनों में वहां पर कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। दुर्गम क्षेत्र हैं, वो शहर आ नहीं सकते और आना भी और रहना भी बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर वो मजबूरी में काम करते हैं। और यहाँ पर जो उनको ले जाया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, जहाँ पर उनको पता नहीं होता है कि कौन उनके मालिक हैं। मानिए ये मेरा मेडन स्पीच है जी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन है। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब उनकी दुर्घटना होती है तो उनको पता नहीं होता कि कौन उनकी देखरेख करेगा। उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। आपको पता होगा कि वहाँ डायन प्रथा है। डायन प्रथा के पीछे की वजह भी मैंने देखी है। डायन कौन घोषित करता है? जिसमें कि महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, बाल नोच दिए जाते हैं, उनको मैला पिलाया जाता है, उनको पूरे गाँव में नंगा करके घुमाया जाता है। डायन करार देते हैं ओझा, गुनी, भोक्ताइन। आखिर क्यों लोग ओझा गुनी की बात सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गरीबी की वजह से वो जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, फीस नहीं दे सकते, तो वो जाते हैं ओझा गुनी के पास झाड़ फूँक करवाने के लिए। और झाड़ फूँक करके जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो तुरंत वो गाँव की किसी ऐसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये बीमारियों की वजह, इनकी मौत की वजह ये डायन है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि डायन उन लोगों को ज़्यादा बोला जाता है जो कि कुपोषण की वजह से कुबड़ी हो गई हों, जिनके खाल काले पड़ गए हों, चमड़े सिकुड़ गए हों, वो विभत्स देखने में हो जाती है। ऐसी महिलाओं को डायन करार देना बहुत आसान होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ महंगाई को बढ़ाना कितना अन्याय है
मान्य, ये जरा सोचने की बात है। आपको पता होगा कि बच्चे आजकल अपराधी हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मिस माजी, हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मेरा देखिए 6 साल में एक बार मुझे ये मौका मिला है। हाँ नहीं, 6 साल में एक बार नहीं, आपको और मौका मिलेगा। बात ऐसा है, आज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी। एक बार सर, प्लीज डोंट सर, महिला when sir is speaking, don't cross talk, don't. आज से मेडन स्पीच है और से मेडन स्पीच का आज समय 1-2 मिनट हम तो बढ़ा देंगे, लेकिन मेडन नो डोंट वरी, whatever sir is saying you have to listen. It's not wrong. Don't evaluate. तो आपको 1-2 मिनट हम दे देंगे, लेकिन आज से का 15 मिनट अगर हम करेंगे तो आज इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। और बड़े पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, इनके स्पीकर्स है। हाँ, अब 2 मिनट में खत्म कीजिए, 2 मिनट बस। बच्चे अपराधी होते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। उनको अपनी सब्जियों को लेकर अगर वो बाजार जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे नहीं है उनके पास, ऊपर से ये महंगाई। अब सभी समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार इतना ज़्यादा खाद्यान्न पर टैक्स पड़ा है या उसकी कीमत बढ़ी है। और कई आदिम जनजातियाँ हैं जो कि जवान नहीं होते, वो सिर्फ बचपन से बूढ़े सीधे बूढ़े हो जाते हैं। 30-40 साल के बच्चे व्यक्ति को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक क्षेत्र के विकास की कहानी दूसरे क्षेत्र के विनाश की कहानी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ से जो खनन होता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तमाम यूरेनियम वगैरह का, उसका दुष्प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पोषक खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। महंगाई की मार से वो नहीं ले पाते। लघु वनोपज, जिन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसको भी वन अधिनियम के अंतर्गत लाकर उसके तरह तरह का टॉर्चर होता है, उससे भी वो नहीं ले पाते। जैसे आपको पता होगा कि खुखरी, रुगड़ा, घोंगा, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन जंगल में भी जाना उनका कई जगह प्रतिबंधित हो गया है। पोषक आहार उनके मिलता नहीं है और इसकी वजह से उनका हेल्थ दिन पर दिन डाउन होता जाता है। एक तरफ आपको मैं बता दूं कि कोयला, जहां वहां से कोयला मिलता है, लेकिन रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ जो बकाया है केंद्र सरकार के कोल कंपनियों की तरफ, वो नहीं देती है केंद्र सरकार। और ऊपर से डीवीसी का 8,000 करोड़ खाली वसूलने के लिए हमारी बिजली काट दी जाती है। धन्यवाद महोदय, बस थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी जस्ट रिपीट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड कॉल अटेंशन, इसमें मेडन स्पीच नहीं होता है। आप बाद में बोलिएगा, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आप खत्म, अब समाप्त कीजिए। मेडन स्पीच का मौका मिलेगा? नहीं, हाँ, बाद में मिलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं, कॉल अटेंशन में नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोल लेती हूँ प्लीज। हाँ, अब आप समाप्त कीजिए प्लीज। देखिए, एक तरफ हम जंगल काटने की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, वो अब कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल, गैस की कीमतें कि वो खरीद नहीं सकते। महोदय, मैं सच कह रही हूँ और सच के बारे में प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था, टेलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज रिवॉल्यूशनरी। और मुझे लगता है कि सोशल रिवोल्ट इन महंगाई के कारण से ही हो सकता है। इसका दूर दूर तक असर पड़ता है और इसके परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ कई क्रांतियां हुई हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, महिलाएं भी बहुत सारी थी, जिसमें सिंधी दई, कैली दई, फूलो, धन्यवाद। मैं द नेक्स्ट स्पीकर, मैं दूसरे स्पीकर बुला रहा हूँ। द नेक्स्ट स्पीकर इज, ब्रिटिश पीरियड में अकाल हुआ था बंगाल में, भयानक अकाल। आप बाद में बोल लीजिए, समय मिलेगा आपको। अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिक्स ने कहा था कि वो मैन मेड अकाल था ब्रिटिश शासक के गलत नीतियों की वजह से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही बात यहाँ दोहराई जा रही है। आज श्रीलंका नेक्स्ट स्पीकर इज अब्दुल वहाब। अगर ये कीमत कम नहीं की जाएगी तो अब्दुल वहाब दिया जाए। और मुझे लगता है नॉट प्रेजेंट। वीरेंद्र प्रसाद बैश्या। हमारे राज्य में जिस तरह से ऑपरेशन, आप शुरू कीजिए मिस्टर बैश्या। हम गरीबों के लिए पैसे नहीं है। आर यू विल्डिंग? Sir, Chairman, sir, I'm raising a point of order.
My past Under what rule? No, point of order. Under what rule? Procedure, regarding procedure. Regarding, we are having four members. Four members were in the party, but we are not at all calling. I have been given so many times, I am requesting, my name is not calling to You speak. come in the chamber, it will be discussed, It's not good. or you show the rule. Your name is there. Your name is there. Absolutely. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to take part in the today's discussion, short duration discussion, price rise on essential commodities, sir. Subject is very important. Last 16 days, House was the past the time without discussing any bill, any issue, as issued by the leader of the House, Parliamentary Affairs Minister, with consultation with the opposition, to the time has allotted for discuss this topic, sir. Sir, world economy to the passing through a very critical time, sir. Due to the corona, due to the Ukraine-Russian war, world economy to the passing through a very critical way, sir. The growth percentage of superpower country like USA today is declining, sir. The banking industry, China, to the facing serious threat due to the no payment paid by the builders, real estate businessmen, sir. In this critical time, due to the corona, due to the Ukraine war, inflation percentage is 7% is our country, sir. No doubt, sir, this is high, but, sir, in this critical time, world is passing through bad critical economic times due to the Ukraine war and due to the corona. This 7% inflation, although it is high, it is, I must compliment government, at least in this critical time, they have maintained it successfully, sir. Sir, we remember one thing, sir. One ration card under the leadership of Narendra Modi government and issued in our country, sir. One ration card is applicable in entire India, sir. Sir, it is really helpful to the migrant worker. During the corona time, we have seen suffering of migrant workers. What problem they have faced? They are working hundreds of kilometers without food, without water. But after one ration card, one nation, one ration card, after this theory introduced by, this scheme introduced by the Narendra Modi government, the migrant workers, they get benefit, and any card holder, he may be from Kerala, he's moving to the Assam, he will get food in the state, sir. I must give compliments to the government, sir. Sir, ethnic or people, sir, government given free food, sir. This is another wonderful job done by our government, sir. Sir, I like to say one thing, sir, because my time is very short, sir.